Good morning everyone and welcome to the class. Today we are going to start a new chapter in political theory and the name of the chapter is rights. We live in a democratic world. Today we can say the modern time as the time of democracy. Every country claims to be a democratic country. Even though it is not really democratic, but still it claims to be like that only, because today is the world of democracy. And in this democratic world, the concept of rights has gained the most important place in the lives of the common people. Moreover, what we find that nowadays the scope of right has expanded, because today we don't only talk about right to life or right to liberty or right to equality, but we also talk about various different types of right, like right to safe drinking water, right to clean air, right to informations. These are the expansion of the concept of right. Not only this, what we find that today we talk about rights, not only rights of human beings, but we also talk about the rights of animals. एनिमल्स राइट्स, उसकी कितने NGOs होते हैं रिगार्डिंग दीज एनिमल राइट्स. पीपल hold protest and all these things for the rights of the animals. The unborn fetus, उसकी भी rights की हम बात करते हैं, बच्चों के rights की बात करते हैं. तो this is the expansion of the concept of right only because of democracy, because democracy is the government of the people, for the people, by the people. The people are the ultimate source of power in a democracy. So the people must be given important place, and this important place can be given only by enjoying more and more rights. So we will under this chapter we are going to deal with the concept of right. So the first question is, what are rights? What do we mean by rights? Rights होते क्या हैं? Okay. So we will see. A right is essentially an entitlement or a justified claim. It's an entitlement. Entitlement means जो हमें मिला हुआ है, जिसके हम eligible हैं, जिसके लिए we are entitled to have this right to life. ये हमारी claim है, because we have taken birth as a human being, so we must have some rights. We claim these rights from our political system, from our social system, कि अगर हमने human being के form में birth लिया है, तो then we must have some rights. These are claims or entitlement. It denotes what we are entitled to as citizens, as individuals, and as human beings. First of all, we are all human beings, and because we are human beings, we need some rights in order to live the life of a human being. There must be some rights. तभी हम एक इंसान की जो लाइफ है उसको हम लीड कर सकते हैं. Otherwise our life will deteriorate, and we will in the absence of rights we will be forced to live the life of an we can say animal type of life हम लोगों का हो जाएगा. अगर हमारे पास rights ना हो तो हम ह्यूमन बीइंग की जो डिग्निटी होती है, वी विल लूज दैट डिग्निटी. ये डिग्निटी हमें कहाँ से मिलती है? दीज राइट्स विच गिव अस डिग्निटी. तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे कुछ क्लेम होते हैं. एज एन इंडिविजुअल
हमारे कुछ क्लेम होते हैं. वी वॉन्ट सम राइट्स बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग. वी वॉन्ट सम राइट्स बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एक अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग अगर हम इसको सेग्रीगेट करना स्टार्ट करें तो वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट वी ऑल may not be belonging to the same country. We all belong, the different people belong to different countries. So as a member of a country, as a citizen, member of a country means citizen. As a citizen of the country, we are entitled with some rights. क्योंकि अगर हमको सिटीज़न हम हैं किसी कंट्री के, तो उस सिटीज़न के जो भी ड्यूटीज़ है उसको पूरा करने के लिए वी मस्ट हैव सम राइट्स. इट इज़ समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस. All concepts are related to each other. Liberty, equality, justice, rights, all are related to each other. As we have seen in the concept of social justice, when we were discussing what do we mean by justice, we have seen that justice is to give everyone what is due to his or him. है ना, जिसका भी जो ड्यू है वो उसको मिलना चाहिए. दैट इज जस्टिस. एंड अगेन इन द डिस्कशन ऑफ राइट्स वी अगेन फाइंड दैट वी कंसिडर इट इज समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू टू अस. ये हमें मिलना चाहिए. क्या? राइट्स. इट इज ड्यू टू अस. जब तक हमें राइट नहीं मिलेगा तब तक वी विल नॉट बी एबल टू लिव द लाइफ of a human being. We will not be able to live the life of a citizen of a country. Something that the rest of society must recognize as being a legitimate claim that must be upheld. So what is right? Rights are something that the society must recognize it as a legitimate claim. If we are claiming rights, it is legitimate claim. Legitimate means it has a legal authority. Rights के पीछे क्या होती है? Legal authority होती है. Rights हमें हम claim करते हैं rights को, और जो society होती है, जो system होता है, वो हमें rights देती है. But जब वो rights देती है तो वो हमारा legal rights होता है. Okay, legalized होते हैं. उसके पीछे लेजिटिमेसी होती है. लेजिटिमेसी का मीन्स ये होता है कि उस राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता है. दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज अ राइट. इट्स नॉट कि एवरीथिंग विल कम अंडर द परव्यू ऑफ द राइट. राइट मीन्स क्लेम, बट वी कांट क्लेम ईच एंड एवरीथिंग. There must be some segregation. There must be some criteria for a claim to be right. I may want to wear the clothes of my choice to school rather than the prescribed uniform. I may want to stay out late at night, but this does not mean that I has a right to dress in any way I like at school, or to return home when we choose to do so. So we can say that each and every desire of us cannot be regarded as rights. We may I may think of not following the uniform, the dress code, whatever is there in the school. So I want to wear clothes of my own choice. Instead of wearing uniform, I want to wear the clothes of my own choice. This kind of desire cannot come under the definition of rights. I may choose to come back to home in late hours. I want to stay out late at night. I may want, but this cannot be my right. So what we see that there is distinction. There is distinction between what I want and
think I'm entitled to and what can be designated as rights. So there is distinction. What I want, क्या हम चाहते हैं, what I think I am entitled to, कि ये मुझे मिलना चाहिए, हम उसके लिए एलिजिबल हैं, और क्या हमें राइट्स के फॉर्म में मिलता है. तो ये तीन जो हैं, ये तीनों डिफरेंट चीज़ है. what I want, what I want, what I am entitled to, and the last one is what can be so there is difference between these three situation. इन तीनों situation में distinction है, फ़र्क है. what is this? what I want, हम क्या चाहते हैं? I want to wear I don't want to wear school uniform, but I want to wear the uniform of my own choice in the school. I may want, ये हम चाह सकते हैं. Second is what I am entitled to. किसके लिए हमारे पास किसके एंटाइटलमेंट है. ये अगर हम सोचते हैं कि yes, I can wear whatever I want in the school, that I am thinking that I am entitled to that, which is wrong. Okay, and then the last thing is what can be designated as rights. किसको हम right माने, क्या हमारा right है. Is it my right to wear whatever I want to wear in the school? Okay, so these three are different things. There must be this distinction between these three. हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी चाह रहे हैं वो हमें right के form में मिल जानी चाहिए. Rights are primarily those claims that I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. So rights are not something which is concerned with only a single person or individual. Right is something which is the requirement of the whole group. Those claims that I, along with others means the other members of the society, the other citizens, बाकी लोगों के साथ साथ हम इसको क्लेम करते हैं. We cannot claim कि हमें सिर्फ ये मिलना चाहिए. All the people are, all the students are coming in the uniform, school uniform, and I consider that I can go without wearing that uniform. I can go in any of the dress. If I am thinking like that, then I am thinking that I am entitled to, I am somehow privileged, I am belonging to some privileged group, and that is why I am entitled to do this. So this is not right, है ना. ये right के व्यू में नहीं आता है कि हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पे सोचें. अगर हम बाकी लोगों से अपने को अलग करके सोच रहे हैं तो हम in that situation we are considering ourselves as a privileged belonging to I am considering myself that I belong to a privileged group. तो this should not be there. ये राइट के अंदर ये नहीं आता. राइट का मतलब ये है कि हम अपने साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी बात कर रहे हैं. I, along with others, regard to be necessary for leading a life of respect and dignity. तो सभी लोगों की लाइफ में और डिग्निटी होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, और इस डिग्निटी और रेस्पेक्ट को अचीव करने के लिए राइट्स आर क्लेम्ड. हम राइट्स का क्लेम क्यों करते हैं? वाई डू वी क्लेम राइट्स? वी क्लेम राइट्स in order to live the life of dignity, in order to live the life of respect.
और ये सबके लिए एक बराबर होता है, इट इज़ इक्वल फॉर ऑल। वी कांट से कि किसी को ज़्यादा राइट्स मिल जाए, किसी को कम राइट्स मिले, दैट इज़ अनदर थिंग, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। स्पेशल नीड्स की बात जब आती है तो वो अलग चीज़ होती है, दैट इज़ पॉजिटिवली जब हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इक्वल राइट्स, सबको एक जैसे राइट्स मिलने चाहिए, देन ओनली वी कैन थिंक of leading a dignified and respectful life. In fact, one of the grounds on which rights have been claimed is that the represent a condition that we collectively see as a source of respect and dignity. So we can say that we claim rights because the rights represent the condition in which we can lead a dignified life collectively. Whenever we are talking about rights, it's not only about a group or an individual, but the society as a whole. तो जो rights होते हैं, they represent the condition in which we are able to live a dignified life. For example, the right to livelihood may be considered necessary for leading a life of dignity. Right to livelihood is very much important. If we want a dignified life, we must have some livelihood. In the absence of livelihood, we will not be able to lead a dignified life. In that case, we will have to depend on others for in order to fulfill the needs of our life, basic needs of our life. So if we are dependent on someone other for fulfilling the basic needs of our life, then it means that we are not leading a dignified life. तो अगर हम एक dignified life चाहते हैं तो the first requirement is right to livelihood. Then only we can think of leading a dignified life. Being gainfully employed gives a person economic independence, and thus is a center for his or her dignity. है ना? What we see that if someone is employed and he is getting salary or monetary benefit, he is getting monetary benefit, then that is very much important for his or her dignity. In the absence of this we can say financial independence or economic independence, there cannot be dignity in the life. तो अगर हमको डिग्निटी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कुछ न कुछ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सोर्स होना चाहिए. Having our basic needs met gave us freedom to pursue our talents and interests. So the first need is to fulfill the basic needs of our life. And how we will fulfill the basic needs of our life? By pursuing any job or any source of livelihood. कुछ भी हम वैसा करेंगे जिससे हमको इकोनॉमिक गेन हो रहा है, that will ensure the fulfillment of the basic needs of our life. और जब हमारे fulfillment हो जाएगी basic needs of life की, then we will try to pursue the ambitions of our life. तो पहला काम क्या है? First thing is to fulfill the basic needs of the life. और जब basic need पूरी होगी, then only we can think of pursuing our aims in the life. Then we can think of developing the inner talents, whatever is there inside us. जो भी हमारे talents हैं, interest है, उसको हम तभी develop करने की सोचेंगे. तो first requirement is fulfillment of basic need. First right we can say is right to livelihood. So having our basic needs met give us freedom to pursue our talents and interest, or take the right to express ourselves freely. When our basic needs are fulfilled, then we talk about other rights, like how to promote, how to
develop our talent and skill, how to express ourselves, हम अपने आप को freely express करना चाहेंगे, तो सबसे पहली नीड है बेसिक नीड्स को पूरा करना. जब वो पूरी होगी then only we can think of other rights. This right gives us the opportunity to be creative and original, whether it be in writing or dance or music or art or any other creative activity. So right to freedom of expression, it is we must have right to express ourselves, whatever is there inside us, whatever views are there, whatever imagination is there inside us, that must be expressed. We must have the right to express all these things, all these ideas, the imagination, the creativity, जो कुछ भी हमारे अंदर है, हमें उसको express करने की आज़ादी. That is the most important thing. इसकी इस राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं. राइट टू स्पीच, राइट टू परफॉर्म डांस और आर्ट के फॉर्म्स होते हैं. ये सारे ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और ये हमें फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपने आप को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को हम एक्सप्रेस कर सके बाय स्पीच, बाय राइटिंग, बाय डांस, बाय आर्ट, बाय म्यूज़िक, बाय सॉन्ग, इन एनी वे. जो कुछ भी हम देखते हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी में न्यूज़ आते हैं, देन हमारे स्टोरी बुक्स होते हैं, देन नॉवेल्स होते हैं, मूवीज़ होते हैं, ऑल दीज आर राइट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. एक जो मूवी बनती है हमारे बॉलीवुड की, दैट मूवी इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम. जो भी हमारे दिमाग में था, हमने उसको एक मूवी के फॉर्म में दिया या फिर एक प्ले के फॉर्म में हमने उसको दुनिया के सामने लाया. तो ये राइट हमें होना चाहिए. But freedom of expression is also important for democratic government, since it allows for the free expression of beliefs and opinion. In a democracy, it is very much important. We cannot think of democracy without freedom of expression. क्योंकि जब हमें freedom of expression होगा, तभी हम अपने गवर्नमेंट तभी डेमोक्रेटिक हो पाएगी. क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिस है, दैट इज़ फ्रीडम. और अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ना हो तो दैट बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी विल बी अबॉलिश्ड. फिर डेमोक्रेसी होगी ही नहीं. राइट सच एज राइट टू अ लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन would be important for all human beings who live in society, and they are described as universal in nature. So these rights, like right to livelihood, right to freedom of expression, these are universal right. Because we can't say कि किसी एक सोसाइटी के लोगों को राइट टू लाइवलीहुड चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए. किसी एक कंट्री के लोगों को राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, अदर्स को नहीं मिलना चाहिए. नहीं, दीज आर द राइट्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर. दीज कम्स अंडर ह्यूमन राइट्स. क्योंकि हमने इंसान के फॉर्म में हमने बर्थ लिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट वी मस्ट हैव सम राइट्स. तो दीज कम अंडर ह्यूमन राइट्स, और वी कैन से इट यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स जो सबके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म है, सबके लिए एक है. ओके. अनदर ग्राउंड ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड इज दैट दे आर नेसेसरी फॉर आवर well-being. Okay, so they help individuals to develop their talent and skill. The rights are important for our well-being. Only because of rights we will be able to develop our talents and skill. Talents और skills हमारे सबके अंदर होते हैं. किसी के अंदर थोड़ा कम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, but everyone has some talent and skill. तो जब तक उसको राइट्स नहीं मिलेंगे, he or she will not be able to develop this talent or skill. A right like the right to education, for instance, help to develop our capacity to reason. अगर हमें right to education है, and if we are getting the education, then we will be able to develop our capacity to reason. है ना, ये हमारे reason को improve करता है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है.
जो एक लेवल सर्टेन लेवल सबके पास होती है बिकॉज ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, है ना। बट उस लेवल से हम आगे कब बढ़ते हैं, जबकि हमें एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, नहीं तो हम उसी लेवल पे रह जाएंगे, उससे आगे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ही हमें आगे बढ़ाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारे व्यूज़ को, हमारे सोच को, ये सबको, रीज़न को वो एक दूसरे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। So, right to education helps to develop our capacity to reason, give us useful skills, and enable us to make informed choices in life. You know, when we are educated, we will be able to make right choice. There will be more probability कि we will make a right choice if we are educated. तो हाँ, चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या चूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये हम कैसे चूज़ कर रहे हैं, हम अपनी रीज़न से चीज़ों को, बहुत सारे हमारे सामने चॉइसेस होते हैं, उन चॉइसेस में हम किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। किसको हम सेलेक्ट करते हैं, किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन आवर रीज़न। और ये रीज़न हमारा कैसे डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम एजुकेटेड हैं तो वी विल बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। It is in this sense that education can be designated as a universal right. So in this sense we can also say that right to education is also a universal right. Okay. However, if an activity is injurious to our health and well-being, it cannot be claimed as a right. Suppose some activity is not good for our health, then that cannot be claimed as right, because that is not good for our health, that is injurious for our health. For instance, since medical research has shown that prohibited drugs are injurious to one's health, and since they affect our relation with others, we cannot insist that we have a right to inhale or inject drugs or smoke tobacco because it is injurious to our health. The medical science has proved it that there are some drugs which are not good for our health. If we are taking that drug or those drugs, then it will deteriorate the medical condition of the person, and it will also affect the relation with other people. तो we cannot claim कि हमें right to स्मोकिंग होनी चाहिए और राइट टू टेकिंग ड्रग्स होना चाहिए, इंजेक्ट और इनहेल करने का ड्रग्स को हमें राइट होना चाहिए। वी कैन नॉट क्लेम, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है, द इफेक्ट इज इंजूरियस नॉट ओनली टू द person who is taking that drug or smoking the tobacco, but also to his surroundings. Drugs may not only injure our health, but they may also sometimes change our behavior pattern and make us a danger to other people also, है ना। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं डेंजरस है, बट जो हम जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं, जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे आसपास के लोग, ये उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये हमारे बिहेवियर पैटर्न को अफेक्ट करता है। द पर्सन हु इज़ टेकिंग ड्रग्स और एनीथिंग लाइक दैट, गलत ड्रग्स जो इनहेल कर रहा है या इंजेक्ट कर रहा है अपने में, तो दैट पर्सन कैन बी थ्रेट फॉर द होल सोसाइटी. So, in terms of our definition of rights, smoking or taking banned drugs cannot be claimed as a right. We cannot claim it as a right. So, we have seen that rights can be claimed on two grounds. There are two grounds. The first is grounds for claiming rights. What are the grounds on which we claim rights? This is the question. What are the grounds on which we claim rights? तो पहला ग्राउंड क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट
and dignity. We claim rights because we want self-respect, we want dignity in our life, and the rights which give us self-respect and dignity, we can these are examples which the rights which can give us self-respect and dignity is right to livelihood, then right to freedom of expression, then there is second ground also for claiming of the right. On the second ground on which we can claim right is the well-being. And under this well-being of people, we can claim right to education. Because education enhances our reason, and when we are reasoned person, we will be able to take the right decision. And when we will take right decision, then our well-being will be इम्प्रूव्ड, हम हमारे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो अच्छी होंगी. तो दिस राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर दिस वेल बीइंग ऑफ द पीपल. सो दीज आर द यूनिवर्सल राइट्स. All the human being of all the of the whole world needs these rights. These are called universal rights. And the another name for universal rights is human rights. Okay, so we will continue our discussion on rights in the next class.